So Devavrat already joined Kuloniki. Yes, sir. Okay. So let me introduce Devavrat. हमको हेल्प करिवे जो मानकर एग्रीकल्चर ऑप्शनल ऑलरेडी अच्छे वर्ष ओपीएससी पे हमको गाइड करिवे हेल्प करिवे केमती कोन हमर अप्रोच रहइबो एग्रीकल्चर ऑप्शनल पे एंड ऑलरेडी देवव्रत सर ऑलरेडी ए वर्ष हमर 52 रैंक ओडिशा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रे एंड ऑलरेडी PhD student from OIT, so many of you already known कि जब मैंने OIT belong करूँ जो and जरूर सर हमको हेल्प करिवे पर्टिकुलरली आप ପାଇଁ जेहेतु केमती कोन अप्रोच रे हम लिखिबा दरकार तो and को भले आंसर राइटिंग रहबा दरकार आ गोटे होची जे जो माने कर आंसर ऑलरेडी तमे लिखि छ हमें गूगल क्लासरूम देछु सेठी अपलोड करि परिबे एंड फॉर डायरेक्टली भी सर को पीडीएफ तमे जतले लिखु छ मेक इट पीडीएफ हमरा से जो एग्रीकल्चर ग्रुप करा जाय छी सेथरे ऑलरेडी सर एडमिन रे अछंदी तो डायरेक्टली तमरो पीडीएफ सेंड करि परिबो सर को फॉर इवैल्यूएशन पाई और फीडबैक पाई कोन केमती इंप्रूवमेंट करिवार अछि कोन अछि तो सर सेटा ऑलरेडी इवैल्यूएट करि कि फीडबैक देबे एंड देन वी कैन प्रोसीड कि केमती आंसर लिखिबा कथा भी सर किछि सेटा हमें डिस्कशन करिवे सो थैंक यू देवव्रत एक्चुअली हमें बहुत ट्राई करथिलु कि एग्रीकल्चर पाई केमती जेहेतु गोटे पूरा स्पेशलाइजेशन टॉपिक रहउची मो रिक्वेस्ट रखी कि देवव्रत सर एग्रीड टू हेल्प अस तो लेट्स स्टार्ट कि ए जो जर्नी हमरा ओपीएससी रे जर्नी जो माने ओपीएससी हो कि हमरा ओएस हो किबा ओएफएस हो तो दीटा का जेहेतु एग्रीकल्चर गोटे कॉमन टॉपिक रहउची तो समस्ते हमरा प्रिपेयर करि परिबे जो एग्रीकल्चर को एज ऑप्शनल नै कि मतलब मॉक टेस्ट दीटा गलाणी और कल थर्ड नंबर हबो किंतु आज हमें केमती को अप्रोच रे लिखिबा दरकार आंसर केमती सर किछि हमको गाइड करिवे ओ आंसर भी किछि केमती लिखिबार अछि कहिबे एंड विल लाइक प्रोसीड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स तो सेटा हमें स्टार्ट करिवे थैंक यू सो मच देवव्रत एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म thank you so much for keeping my request and agree to help the students or guiding the students. Thank you, Devavrat. Over to you. Devavrat, mo damko 1 minute. आज आज को होस्ट कर दो छी. मैं अनम्यूट करी दे अनम्यूट आई थिंक म्यूट अच्छा सर एम आई ऑडिबल हां हां यस
Hello. Yes, Devrat, you are audible. Only mute here. Yes. नमस्ते Devrat. Audible अच्छा. सर अबे ठीक अछि? हाँ ठीक अच्छे Devrat. Let me share my screen first then. Okay. Sir, is it visible? Yes, visible Devrat. मॉडल आंसर नहीं सर कहिबे डिस्कशन करिवे कि केमिति कोन ऑप्शनल मॉडल आंसर मिलियो टिके कोनोसी भी मॉडल आंसर दिया होनी कोनोसी ऑप्शनल ले किंतु सर कहिबे जे केमिति कोन लिखिबार अछि पॉइंट्स बैकअप आइबे देवव्रत आई थिंक नम वॉइस ठीक रे सुबोनी अन्य माने को वॉइस आछि कि ना मते आछने आई थिंक ऑन नेटवर्क इश्यू से मैं ब्राउज से जानकारी ओके ठीक अछि ठीक अछि तंगरा लेफ्ट आउट हे गेले मे भी आउट से जानकारी गोटे मिनट वेट कर जाए सर जाने हेलो. हाँ देवव्रत यू आर तेरे सुना गला? हाँ ठीक है सर. Sir, should I start? yes Devrat we can start एजण एठी नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड रे अछ टिके हाथ रेस करिवो. So almost 50%. ठीक अछि, let's start the discussion first, then we would get into the questions. जदि तमर किछि डाउट थिबो या किछि सोर्सेस रिलेटेड थिबो तो सेटा तमे लास्ट को पचारि परिबो. Is it visible, guys? yes Devrat it is visible सटे पिलां कहबे मधुरे मधुरे वॉइस अनम्यूट करी कहि दोतबे मोर स्क्रीन शेयर हला परे मु एक्चुअली बैक कर परिबे. हाँ ठीक अछि ओ as you know कि एग्रीकल्चर रो दीटा को ओएफएस एग्जाम रे 300 मार्क्स रो अछि एग्जाम आउ
OCS exam dot 250 तो OCS मोस्टली फॉलो करिवो से UPSC पैटर्न को 10 and 20 मार्कर वाला क्वेश्चन आउ OFS रो जेमती चलथिला मोस्ट प्रोबेबली से 40 and 10 को ही से स्टिक करिवो तो 50 into 5 50 into 6 300 मार्क्स रो सो दीटा को बैलेंस होला बेले 10 and 20 मार्क्स रो क्वेश्चन दिया आइतला तुम मानको तो for the first class we would discuss few questions on soil science, then I would take questions from you, then in the coming classes we would further discuss about the agriculture optional and the questions. So let me share the synopsis first. Is it visible, guys? Yes, there was it visible. Yes, sir. So first question was write short notes on potassium fixation. We will attend to the potassium fixation of soil. Then physical and chemical characteristics, factors of soil formation, and lastly the nutrient use efficiency. So let's go with potassium fixation. तो जो माने एग्रीकल्चर बैकग्राउंड रे अछंती से माने तो जानि चंती ऑलरेडी पोटेशियम फिक्सेशन कोन तो जो माने नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड फर्स्ट आई वुड लाइक टू हैव ए इंटरेक्शन विथ देम फर्स्ट के प्लस फिक्सेशन माने बुझुछ ना बुझुनो हेलो हेलो Yes, sir. am I audible, guys? Yes, sir. Audible. तो डिस्कशन को टिके इंटरैक्टिव रखिबा मु माने फर्स्ट क्लास इवन तुम मानकर कॉपी भी मुकार देखिनी तो तुम माने कोन देखिचो या कोन माने कोन जानिचो से जिंस भी जानिनी तो फर्स्ट क्वेश्चन नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड पिलां को जे के प्लस फिक्सेशन विषय रे किछ जानिचो या जानिनो हेलो 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 am I audible to everyone? Yes, there was audible, but तुम जानि चोदी कोन ऑनलाइन सर को को जे नहीं मु जानने बोली माने नॉन बैकग्राउंड रो छ कि माने बैकग्राउंड रो अछि तमे कहि परिबे अरे किछि भी जानिचो तो को आगे के प्लस फिक्सेशन विषय रे किछि भी तो को सो दैट मु फर्दर डिस्कशन आगु बढ़े परबी नले ये इंटरैक्टिव क्लास कम कोचिंग क्लास अधिक आइ जिवो मॉक टेस्ट डिस्कशन कम होबो आ पढ़ा पढ़ी अधिक आइ जिवो anyone from agricultural background anyways तो जेतबेले भी तो लेट मी स्टार्ट कि जेतबेले भी किछि भी क्वेश्चन आसे शॉर्ट नोट्स रिलेटेड या किछि भी एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन आसे तो फर्स्ट स्टार्ट विथ द डेफिनेशन तो फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज के प्लस फिक्सेशन तो के प्लस फिक्सेशन इज व्हेन एक्सचेंजेबल और वाटर soluble K is fixed as non-exchangeable K. तो first you have to define what is K plus fixation. तो जितबेले soil ले different pools थाए nutrient मानकर तो से pool हैला like exchangeable potassium, fixed potassium, structural potassium, solution potassium. तो से जितबेले available form like exchangeable and solution potassium जितबेले non-exchangeable form like fixed K रे convert हो जाए then it is known as potassium fixation. ठीक अछि
So then how it is, what is the procedure of fixation of potassium in soil? The potassium fixation was first discovered by Kellner and Dyer. Then the most accepted theory that you have to write is the lattice hole theory. The lattice hole theory was given by Page and Beaver in 1940. तो एथिरे कोन हुए ना जो क्ले मिनरल थाए क्ले मिनरल ले ऑक्सीजन मानकर गोटे हेक्सागोनल कैविटी फॉर्म हुए जस्ट लाइक दिस एंड ए हेक्सागोनल कैविटी रे तार डायमीटर थाए 2.8 एंगस्ट्रॉम तो इट क्रिएट्स ए होल एबे सेम डायमीटर रो जदि किछि भी कैटायन अछि लाइक K+ ammonium potassium and ammonium having diameter 2.66 angstrom 2.86 angstrom get fixed into it तो केंते फिक्स होंती ना एनी expanding clay when comes in contact with water it expands तो या भीतर एबे होल क्रिएट हो जाए नेक्स्ट से होल डायमीटर जेतु पोटेशियम से तो सिमिलर थाए तो पोटेशियम जाएगी ता भीतर फिक्स हो जाए तो दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर तो जेतेबेले तुम क्वेश्चन पढ़ियो पोटेशियम फिक्सेशन तमे कोन लिखिबो तो फर्स्ट इज व्हाट इज पोटेशियम फिक्सेशन देन द प्रोसेस then if you are having time and according to numbers allotted you can go to the factors as well ठीक अछि so any doubt about the first one सर प्रोसीजर टा ठीक आउथरे डिटेल्स टा पढि ठीक अछि तो सॉइल ले कोन थाए सॉइल ले डिफरेंट टाइप्स रो क्ले थाए क्ले मिनरल्स एंड आई होप कि तुम माने ऑलरेडी पढ़ी छ पढ़िला परे एग्जाम रे लिखि छ सेते मु डिटेल्स को जाउनी खाली ओवरऑल गोटे गोटे आईडिया खाली करि दउ छी जे क्ले मिनरल्स थाए डिफरेंट क्ले मिनरल्स थाए तो ता भीतर केतना थांती एक्सपैंडिंग क्ले मिनरल जोटा कि वाटर प्रेजेंस रे एक्सपैंड कर जानती केतरा लिमिटेड एक्सपैंडिंग थांती जोटा टू ए सम एक्सटेंड एक्सपैंड करंती एंड केतरा नॉन एक्सपैंडिंग थांती तो मोस्टली कोन हुए तो ये एक्सपैंडिंग जो क्ले मिनरल थाए से तो वाटर प्रेजेंस रे आसे ता भीतर वाटर मॉलिक्यूल्स पसे जानती एंड दे टेंड्स टू एक्सपैंड तो कौन हुए ना लेट दिस इज ए क्ले मिनरल एबे ये तो वाटर प्रेजेंस को आसीबो तो ये हो जाए एक्सपैंड अब एई पोजीशन ले ऑक्सीजन थाए स्ट्रक्चर रे तो दे फॉर्म ए कैविटी एबे कैविटी रो डायमेंशन इज 2.8 एंगस्ट्रॉम तो से 2.8 एंगस्ट्रॉम भितरे जो भी कैटायन हैविंग सिमिलर डायमेंशन they can enter into the cavity like potassium having 2.66 angstrom ammonium having 2.86 angstrom ठीक अछि this is the माने whole concept of K plus fixation and जते बेले भी K plus adsorb हुए को जगह रे तो तीनटा पोजीशन लोगे सरफेस रे ही परिबो जे को हमें प्लानर पोजीशन बोली कोंती ब्रोकन एजेस रे ही परिबो जे को हमें एज और ई पोजीशन बोली कोंती एंड जोटा कि हमें एबे पढ़ले लाइक हेक्सागोनल कैविटी रे जाय कि एडजॉर्ब हो जाए ताको इंटर लेयर और आई पोजीशन कोंती बस दिस इज द K plus fixation सिंपल क्वेश्चन सिंपल आंसर एंड जदी तुम्हारा आहु अधिका किछि पचार छि देन यू कैन राइट फैक्टर्स जदी पचारि छि जदी टाइम अछि ताले हां ठीक अछि फैक्टर्स लेखो जदी तुम हाथ फास्ट देन भी यू कैन राइट वेल एंड गुड ठीक अछि एनी डाउट नो सर ठीक अछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ऑन सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स तो अगेन समस्त क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स देन किछि यदि आईडिया कोन लिखिथिबो या फिर क्वेश्चन देखि किछि यदि आंसर देबा को चाहिबो आगे तुम माने दे दियो देन आई वुड डिस्कस
Anyone? So mainly saline soil, alkaline soil, and acidic soils. And Okay. The question was physical and chemical characteristics of salt affected soil. तो आगे salt affected soil कौन कुह तापर हम physical and chemical characteristics को पढ़ेबे. Anyone can answer? अरे एंती चुप हेकी रहला कोन मन निजे भी बुझी परिबोनी आउ पूरा माने क्लास नो भाबले लागिवो तमर मॉक टेस्ट डिस्कशन एंती हेले केते समय भितरे सरीबो सो पार्टिसिपेट करबा स्टार्ट करो जे भी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड रे अछंती से भी कोइ परिबे बीएससी एग्री या फिर जो माने नॉन एग्रीकल्चर अछंती जो जे पढि चंती तांको ठु एक्सपेक्ट करछु आंसर तो क्या आंसर दबो या शुड आई स्टार्ट द डिस्कशन sir, accumulation of excess salt in the soil which affect the plant growth and productivity. ठीक अछि एनीवन एल्स अरे एते सारा पिला अछु किए तो जण जानथिबो सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल कोन सॉइल saline कंसंट्रेशन टा अधिक रहइबो मेनली सर एक्सेस इरिगेशन कंडीशन रे किबा कोस्टल एरिया रे गुडा को प्रॉब्लम देखा दिए जोटा कि सर प्लांट रो वाटर अपटेक कैपेसिटी को कमी दिए जेतु ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन रो डिफरेंस रे ठीक अछि नेक्स्ट एसएस sir सॉरी mainly तीनटा टाइप रो हमर रहछि salt affected soil saline sodic और sodic soil. saline soil जोटा हमर white alkali और soil जोटा होछि और saline sodic जोटा neutral soluble salt सोडियम आयन अफेक्ट करछि जोटा प्लांट को सोडिक सोइल हमर एब्सेंस ऑफ जिप्सम रहछि और ठीक अछि आउ के anyone else anyways तो salt affected soil is a question from problematic soil तो problematic soil तुम एग्जाम रे अछि तुमरो सिलेबस रे तो सेथिर क्वेश्चन तो फर्स्ट टिके हमें ब्रॉड रे जिबा तापर salt affected soil को कवर कर देबा जो फर्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय problematic soil कि को भी soil जदि तार इकोनॉमिक पोटेंशियल को अचीव करि पारुनी due to any constraint be it physical chemical or biological then it is known as a problematic soil तो इकोनॉमिक पोटेंशियल कोन गोटे सॉइल लो इकोनॉमिक पोटेंशियल इज इक्वल टू इट्स प्रोडक्शन पोटेंशियल क्रॉप प्रोडक्शन पोटेंशियल तो को भी सॉइल जदी किछि भी कांस्टेंट पाई फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल कांस्टेंट पाई तार प्रोडक्शन पोटेंशियल और इकोनॉमिकल पोटेंशियल को अचीव करि पारुनी देन इट इज नोन एज ए प्रॉब्लमेटिक सॉइल तो प्रॉब्लमेटिक सॉइल अकॉर्डिंग टू से जो कांस्टेंट थ्री टाइप्स फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल हाउएवर
physical और biological हम पे इते important नुए and chemical is much more important. आउ प्रति वर्ष शायद यही पार्ट रो सब बेले क्वेश्चन आसी सरछि from the chemical part. तो तुम्हें एक्सपेक्ट भी करिवो जे यही पार्ट रो आउ भी क्वेश्चन आसीबो बोले. तो फर्स्ट फिजिकल और बायोलॉजिकल जोटा कि एते हमर दरकार नै ताको टिके टिके डिस्कशन कर दबा देन वी वुड गो टू द मेन वन. तो फिजिकल कौन जो फर्स्ट वन इज फिजिकल हाईली इरोडेड सॉइल. सिंपल जे विंड एंड वाटर इरोजन पाई जदि किछि सॉइल फॉर्म हैला देन ताकू कह जाय हाईली इरोडेड सॉइल. देन ड्यू टू फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स जो किछि भी फिजिकल प्रॉब्लम अछि ता पई जदि किछि भी सॉइल को हमें कहि परिबा फिजिकल प्रॉब्लमेटिक सॉइल लाइक कोन स्लोली परमेएबल सॉइल, highly permeable soil, crusting, subsoil hadpan, then floppy paddy soil and heavy clay soil. आउ को बही रे आउ गोटे भी मेंशन अछि दैट इज शैलो सॉइल. तो दीज आर द फिजिकल कांस्टेंट और फिजिकल प्रॉब्लमेटिक सॉइल. तो या ऊपर आज जाके भी क्वेश्चन भी आसीनी जदि भी तुम्हें पढ़िया को चाहिबो तो या ऊपर गोटे शॉर्ट नोट टिके 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 खाली कोन आईडिया नै जीवो जे कोन सॉइल टा कोन आ तार कैरेक्टरिस्टिक्स कोन आ तार रिक्लेमेशन केनते हे परिबो सेटकी. और नेक्स्ट फॉर बायोलॉजिकल सेमती बायोलॉजिकली भी जोटा हम रहिला होची कोन ना प्रॉब्लमेटिक सॉइल सेमती किछ इंपोर्टेंट नै. तो गोटे इनर्ट सॉइल थाए जोथरे माइक्रोबियल एक्टिविटी जनरली लो थाए, एंजाइमेटिक एक्टिविटी लो थाए, आ गोटे लेस सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन दिस मच ओनली. तो मोस्टली जोटा कि हमर क्वेश्चन ले आसे दैट इज केमिकल वन. तो केमिकल प्रॉब्लमेटिक सॉइल कौन कौन अच्छी किए कहि परिबो. आउ इट इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम सॉइल साइंस जोटा कि तुम प्रति वर्ष एथरो क्वेश्चन आसे. तो केमिकल प्रॉब्लमेटिक सॉइल कौन कौन अच्छी एनीवन. saline soil, alkaline soil, ठीक अच्छे. आउ highly acidic soil, saline alkaline और acidic soil. saline alkaline and acidic soil. ठीक अच्छे. तो मोस्टली कौन ना broadly divided into two types. गोटे है acid soil, yes, based on soil reaction, and based on the salt accumulation, that is salt affected soil. तो आउ कौन ता एसिड सॉइल ले तुम आउ गोटे जिंस एक्सप्लोर कर परिबो दैट इज एसिड सल्फेट सॉइल. ये भी गोटे टाइप ऑफ कौन ना हमरो प्रॉब्लमेटिक सॉइल. एंड इन सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल जोटा कि हमर क्वेश्चन थिला दिस आर डिवाइडेड इनटू saline, alkaline, wait a second, and saline alkaline soil. ठीक अच्छे. तो एबे जिबा जोटा कि हम क्वेश्चन दैट इज जे व्हाट आर द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टर्स ऑफ सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल.
तो जिते बेले भी एटा गोटे जिनस मन रख तो जिते बेले भी क्वेश्चन आंसर लिखुथबो लाइक जदि किछि डिस्टिंग्विशिंग क्वेश्चन किछि भी पढुछि इन एग्रीकल्चर ऑप्शनल और एनी अदर ऑप्शनल फॉरेस्ट्री हो एग्रीकल्चर हो या फिर इवन जीएस भी हो सब बेले ट्राई करो कोन ना फर्स्ट कैरेक्टर्स लिखिया पई और पैरामीटर्स in one column then types of soil जे तो हम 3 types of soil तो 3 types of soil लिखिया स्टार्ट करो तो गोटे गोटे कैरेक्टर या पैरामीटर लिखो देन सेथिरे तीनटा को डिफाइन करबा स्टार्ट करो गोटे कैरेक्टर देन तीनटा को डिफाइन करबा स्टार्ट करो तम काम एग्जाम रे सब बेले होबा दरकार जे इवैल्यूएटर रो काम केनती इजी होबो अब दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन जोटा कि तम पई भी इजी और इवैल्यूएटर पई भी इजी तो जिबा हमें कोठिना सॉर्ट अफेक्टेड सॉइल पाखो तो सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल हमें जानले हमर कोन अछि ना सलाइन अल्कलाइन एंड saline alkaline तो फर्स्ट इज फॉर्मेशन तो फॉर्मेशन कौन सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल as the name suggests salt ro the accumulation hela then this is known as salt affected soil whatever the region may be जिमे कहले तमे एग्रीकल्चर जोठी अधिका इरिगेशन जोठी थाए आ कि कहले एरिड क्लाइमेट रे जंती थाए तो जो भी रीजन पय जदी सॉल्ट रो accumulation हला ताल ताको सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल बोली कहै जाय तो फर्स्ट इज फॉर्मेशन तो डिफरेंसेस कोन थाए तो सलाइन सॉइल ले कोन थाए ना सॉल्युबल सॉल्ट्स calcium magnesium and sodium and soluble salts किए chlorine and sulfate alkaline ले कौन था alkali salts of sodium magnesium and calcium अब alkali salts कौन the salts of carbonate and bicarbonate I mean जदि कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम सल्फेट ए सब डोमिनेट हैला सॉल्ट ताल ताको सलाइन सॉइल बोली कहबा जदि सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट ए सब डोमिनेट हैला देन ताको अल्काली सॉल्ट बोली कहबा और जदि बोथ रो प्रेजेंस थाए देन दिस इज नोन एज saline alkaline soil this is the first formation difference then there are physical characteristics and chemical characteristics so first we would go to chemical characteristics तो जो भी सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल अछि तो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ताको चारटा पैरामीटर रे डिफाइन करा अछि गोटे हला इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द सैचुरेटेड पेस्ट देन द नेक्स्ट वन इज pH then sodium absorption ratio and exchangeable sodium percentage the first one is electrical conductivity of saturation paste given in decisiemens per meter then pH then SAR sodium adsorption ratio and the last one is ESP that is exchangeable sodium percentage ठीक अछि तो गोटे गोटे जिबा कोन खाली कैरेक्टराइज कर देई पड़ेबा तो फर्स्ट इज तो फर्स्ट इसी कहले माने कोन बुझछो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी माने कोन बुझछो एनीवन सॉल्यूशन दा केते मात्रा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर परियो 3 आयन दे परियो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस पे ठीक अछि ताको हम जानिबा केमती काहर प्रेजेंस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी हुए 3 आयन सोडियम ई आयन और सॉल्युबल सॉल्ट्स ठीक अछि देन पीएच कोन the presence of H plus and OH minus ion लो concentration हैला तो जदी हमें ए दीटा कथा खाली भाबिबा as the name suggest इसी रे हमें soluble salts मेजर करू तो या भितरु कोथरे अछि saline ले गोटे और saline alkaline ले गोटे soluble salts रो प्रेजेंस अछि
तो जेतले इसी आसीबो सेतले प्रायोरिटी आमे दबा सलाइन एंड सलाइन अल्कालाइन सॉइल। नेक्स्ट फॉर पीएच, पीएच रे आमे कोन जानले जे गोटे एसिड हे परिबो, गोटे अल्काली हे परिबो, गोटे न्यूट्रल हे परिबो। तो सेमती ही ना ही सजेस्ट करूची जे गोटे अल्कालाइन अछि नेक्स्ट सलाइन अल्कालाइन अछि, तो जगह रे पीएच को दबा प्रायोरिटी। देन फॉर सोडियम एडजस्टमेंट रेशियो एंड ईएसपी, एटा जो सीक्वेंस रे लिखा है कैल्शियम मैग्नीशियम एंड सोडियम, सोडियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, दिस इज द डोमिनेशन ऑफ कैटायन। दैट मीन हमर सलाइन सॉइल ले कैल्शियम रो प्रेजेंस अधिका थाए एंड अल्कालाइन सॉइल ले सोडियम रो प्रेजेंस अधिका थाए। तो एतले सोडियम कथा आसी जाउची सोडियम एडजस्टमेंट रेशियो, देन सलाइन कथा आसी गला, देन एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंट अगेन सलाइन कथा आसी गला। तो लिमिट कोन थाए, लिमिट फॉर EC is 4 deci per liter, pH is 8.5, then SAR is 13 I guess, and ESP is 15। कि पढ़ी चला नहीं ठीक अछि? हेलो ठीक अछि तो? Yes, sir. तो एथिरा हम एबे डिफाइन करिके जिबा। तो फॉर सलाइन सॉइल जेंते हम चलची फॉर सलाइन सॉइल, तो EC is more than 4 due to the presence of soluble salts, and for alkaline it is less than 4, and for saline alkaline it is less than 4. Well, for pH, for saline it is less than 8.5, and for both the other ones it is more than 8.5. However, ये less than 8.5 भी हेई परिबो जो जगह रे soluble salts रो content अधिका थाए। The next ESP, it is less than 15, it is more than 15, and it is more than 15. The last SAR, it is less than 13, it is more than 13, it is more than 13. This is all about chemical characterization. Next comes physical. तो फिजिकल कैरेक्टराइजेशन कौन हुए ना ये केमिकल प्रॉपर्टी जो कैटायन और आनायन थांती से माने ही गवर्न करथांती जे फिजिकली से सॉइल रे कोन थाए या कोन न थाए। तो कोन हला जे डोमिनेंट सॉल्ट को हमें देखिबा प्रथमे जे एथरे सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम थाए, एथरे अल्काली सॉल्ट्स ऑफ सोडियम थाए। तो कैल्शियम और सोडियम दिटा एम्प्टी कैटायन जे कि कैल्शियम सॉइल को डिस्पर्स करे एंड सोडियम सॉइल को कैल्शियम सॉइल को फ्लक्चुएट करे एंड सोडियम सॉइल को डिस्पर्स करे। तो एज आई सेड कि जो अनुसार सीक्वेंस लिखा है तार क्वांटिटी अधिका। तो जते बेले कैल्शियम रो क्वांटिटी अधिका तो सलाइन सॉइल कोन करे ना गुड फिजिकल प्रॉपर्टी, इट हैज गुड फिजिकल प्रॉपर्टी। कौन पाई ना इट कैल्शियम फ्लक्चुएट्स द सॉइल, एंड फॉर अल्कालाइन तो सॉइल इज डिस्पर्स्ड। ठीक है। देन फॉर सलाइन अल्कालाइन अकॉर्डिंग टू डोमिनेशन जदि सॉल्युबल सॉल्ट डोमिनेट हला देन भलो फिजिकल प्रॉपर्टी फ्लक्चुएटेड सॉइल। देन फॉर जदि अल्कालाइन सॉइल अल्कालाइन सॉल्ट जदि डोमिनेट हला देन ये डिस्पर्स करिवो आ खराब सॉइल होबो। आउ कोन हे परिवो ए गुड फिजिकल प्रॉपर्टी रु आउ कोन कोन आसे ना यारो वाटर परमिएबिलिटी इज गुड, then easy cultivation as no clod formation or hard pan formation, that's it. And for dispersed permeability is less and
cultivation is difficult due to properties like clod formation, headpan formation ए सब जिंस तापर आ गोटे रहला जोटा कि कोन ना तार हम कलर कथा नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज कलर तो जेहेतु सॉल्ट थाए सॉल्युबल सॉल्ट्स थाए तो एमाने कोन थाए गोटे व्हाइट क्रस्ट फॉर्म हो जाए ऑन द सरफेस और जते बेला हम सॉइल को देखंती इट अपीयर्स व्हाइट फॉर व्हिच इट इज नोन एज आल्सो नोन एज व्हाइट अल्कली सॉइल तो इट अपीयर्स व्हाइट एंड फॉर अल्कली सॉइल कोन होबो हाई पीएच थाए एंड हाई पीएच कोन होए हाई पीएच रे ऑर्गेनिक मैटर डिसॉल्व हो जाए तो ऑर्गेनिक मैटर डिसॉल्व हे की सॉइल को ब्लैक कलर दिए for which it is known as black alkali soil. So जते बेले भी तुम्हें आंसर लिखुछ तो सेते बेले कोन ना डिफाइन सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स then its physical characters then its chemical characters एमती भी लिखि परिबो और टाइम बचेया पई फर्स्ट डिफाइन कर दलो देन एज टैबुलेशन एज टैबुलर फॉर्म एतकी भी लिख दलो एका कथा जेमती भी लिखि तुम आंसर सरीबार अछि बुझेला Yes, sir. किसी डाउट एथरे No, sir. ठीक अछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ऑन फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन ठीक है या विषय की कोन लिखितलो या की कोन जानिचो जदी कहिबो ताले बेटर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आई होप इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन एनीवन what are the factors of soil formation The parent material, topography, climate. factor. कौन ठीक अछि क्लाइमेट तापरे The climate, topography, parent material, time. आगे से Sir, organism, sir. Living organism. ऑर्गेनिज्म बस बढ़िया तो कौन है जे सॉइल फॉर्मेशन लो पांचटा फैक्टर थाए दैट इज जो माने एग्रीकल्चर से तो पढी चंदे से माने जानथिबे सीएलओ आरपीटी और सीएलओ आरबीटी जोटा भी हे परिबो तो व्हाट आर दिस फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन तो फर्स्ट जेतोले किछि भी क्वेश्चन पढुची अगेन गो बाय डेफिनेशन then move into the question so definition first la what is soil formation so soil formation is nothing but The weathering of rocks and minerals. yes so this is nothing but soil formation तो कौन ना weathering of rocks and minerals which give rise to regolith and when acted upon by soil forming factors and processes it gives a true soil the whole process is soil formation माने rock and mineral रू weathering है कि regolith होगा regolith is the unconsolidated parent material
एंड सेथिरे सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स एंड प्रोसेसेस ऐड हेकी जेतले सॉइल फॉर्म हुए ट्रू सॉइल फॉर्म हुए ताको सॉइल फॉर्मेशन बोली कहा जाए। नेक्स्ट कम द फैक्टर्स। तो सॉइल फॉर्मेशन लो फैक्टर कौन कौन अछि? द फैक्टर अकॉर्डिंग टू डॉक्यूचेव वाज द फर्स्ट वन जे की कहिथिले जे सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स अछि बोली। तो सी कहिथिले कोन? प्लांट मटेरियल, क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिज्म, ओनली तीनटा जे तीनटा फैक्टर अछि। देन आसले जेनी जोटा कि आमे एबे पढचंती क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म, रिलीफ, प्लांट मटेरियल, टोपोग्राफी। कौन कौन? क्लाइमेट, देन organism, then relief or topography, then plant material, and lastly time. तो पांचटा है factors. Then Joffrey divided it into active and passive factors. So first you have to write all this, then briefly describe these are. प्लांट मटेरियल केमती इफेक्ट पड़े, क्लाइमेट रो केमती इफेक्ट पड़े, टोपोग्राफी रो केमती, ऑर्गेनिज्म रो केमती, टाइम रो केमती। फॉर एग्जांपल प्लांट मटेरियल। तो प्लांट मटेरियल कोन हुए? लेट गोटे एसिडिक प्लांट मटेरियल अछि लाइक ग्रेनाइट। तो सॉइल कोन हुए ना? एसिडिक सॉइल हुए। देन जदि प्लांट मटेरियल इज बासाल्ट, then it gives alkaline soil. ठीक है। Likewise, if we discuss about topography, तो topography रे कौन हुए? Topography is nothing but the land configuration or relief or the slope. तो जिते बेले soil formation हुए, जिते upper topography रे किछि थाए और upper relief feature रे किछि थाए, तो से जगह रे कौन हुए? red soil formation हुए, in lower रे black soil formation हुए। Just go by example, गोटे दिटा लाइन एंड एग्जांपल, गोटे दिटा लाइन एंड एग्जांपल। फॉर क्लाइमेट, जदि हेवी रेनफॉल लाइक ह्यूमिड क्लाइमेट हेतिबो तो से जगह रे कोन होबो ना? बेसिक प्लांट मटेरियल लीच हे जिवो आ एसिड सॉइल फॉर्मेशन होबो। जदि एरिड क्लाइमेट हेतिबो सॉल्ट एक्युमुलेशन होबो एंड सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल फॉर्मेशन होबो। तो likewise this you have to answer. First define soil formation, then Dokuchev, Jenny and Joffrey, तापर पांचटा फैक्टर्स रहला, पांचटा फैक्टर को ब्रीफली डिस्क्राइब कर दियो। हे गला तुम क्वेश्चन नो आंसर। तो आज ये तीनटा ही थाउ। एबे तुम माने कोन तुम जो डाउट अछि या फिर केमते प्रिपेयर करिवो या कोन करिवो से रिलेटेड किछ क्वेश्चन अछि सेटा आगे डिस्कशन कर देबा, तापर नेक्स्ट क्लास रो आगु बढ़ियो। सर नेक्स्ट क्लास केबे हो? नेक्स्ट क्लास तुम माने जेबे कहबो। टेलीग्राम ग्रुप अछि, सार जेबे क्रिएट कर देबे सेबे क्लास नै जेबे, किछ असुविधा नै। हां सर, सर से क्वेश्चन आडी देखिए से स्लाइड। हां को हां सर हेलो देखा होउ तो। हां सर को वन बाय वन तुमर जदी किछ क्वेश्चन अछि पछारि परिबो। ये पैडी फील्ड रो नाइट्रोजन रो केमिति लॉसेस गुडा होय सॉइल रो टी कहिबे सर? पैडी फील्ड रो आगे लोअर लो लैंड पैडी फील्ड रो नाइट्रोजन रो लॉसेस सॉइल रो जेमती क्वेश्चन ही दिया है जी, नाइट्रोजन लॉसेस रो क्वेश्चन दिया है जी ना। नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करबा, ए क्लास रे डिस्कशन कर दबा। सेम से खाली गोटे कंफ्यूज करिया पे लो लैंड पैडी सॉइल खाली गोटे ऐड करि जी। जेमती नाइट्रोजन रे लॉस होय फील्ड रो, सेमती ही लो लैंड पैडी सॉइल रे लॉस होय। सेतरे खाली आ गोटे एक्स्ट्रा गोटे फिगर तुमको ऐड करिवार अछि लो लैंड पैडी सॉइल रो, आ एक्स्ट्रा किछि नै। तो सेटा नेक्स्ट क्लास डिस्कशन करिया, एबे ही कर देबी। नेक्स्ट क्लास। हां ठीक अछि।
ଆଉ କିଛି ଆଉ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ? Anything related to materials or preparation or question or answer केमती लिखिबो से related? हेलो सर गोटे क्वेश्चन थिला शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन ऊपर सर से क्वेश्चन रे केमती कोन अप्रोच करबो? तो फर्स्ट तो क्वेश्चन जहां भी आसु तो फर्स्ट वन इज क्वेश्चन जहां भी आसु फर्स्ट वन इज डेफिनेशन तो केमती तुम मार्किंग करा हुए होची एग्रीकल्चर रे सेटा कहि दोची लेट देयर इज ए क्वेश्चन की एठी कहि दोची 20 मार्क रे एउडा तो सब 60 मार्क वाला क्वेश्चन तो देखिथिबो तापर जो माने ओएफएस दोजो तांगर 40 मार्कर्स वाला क्वेश्चन लेथिबो आ मोस्टली ओसीएस रे एथरो एते बडो क्वेश्चन आसीबोनी 20 मार्कर्स रो क्वेश्चन आसीबो तो फर्स्ट वाला कोन ना लेट वी डिस्कस दिस क्वेश्चन एटा लास्ट ईयर रो क्वेश्चन थिला तो डिफरेंशिएट सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी एटा हम खाली कहूची केमिति लेखिबा तापर ओवर द टाइम जते बेले हमें आसी जिबा 20 मार्कर पाखु सेते बेले वाटर यूज एफिशिएंसी ये सेटा भी डिस्कशन कर दबा ठीक अछि तो अप्रोच कौन रहिबो फर्स्ट हला कीवर्ड को बाछो सॉइल फर्टिलिटी प्रोडक्टिविटी फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फर्टिलिटी देन एसेंशियल न्यूट्रिएंट टाइप डाउन फंक्शन एंड एफिशिएंसी ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हला पिला कोन करंती जहा माने एग्रीकल्चर रे तुमे केते पेज लिखुछो सेतकी मैटर करे नै मैटर करे कोन तुमे क्वेश्चन को डिवाइड करके केमते लिखुछो यदि क्वेश्चन 10 मार्क रो भी देछि आ तुमे डेफिनेशन देइनो आ स्टार्ट करबा लिखबा स्टार्ट कर देछो देन तुम मार्क कटि जिवो तो केमते थाए जदि सॉइल फर्टिलिटी मोर अछि लेट 1 4 20 मार्क क्वेश्चन तो चारटा बिट अछि गोटे बिट हला 5 मार्क्स तो जदि गोटे भी बिट तुम मिस करूछो लाइक डिफरेंशिएट सॉइल फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी तमरो 5 मार्क कम रो इवैल्यूएट होबा स्टार्ट होबो दिस इज हाउ द इवैल्यूएशन ऑफ एग्रीकल्चर occurs जदि फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ सॉइल फर्टिलिटी छाडी दोछो देन पुनी 5 मार्क कटि गला व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसेंशियल न्यूट्रिएंट जदि छाडलो पुनी 5 मार्क कटि गला तो एमती टोटल जदि अटेम्प्ट कर देछो ताले तुमे भाबी दियो कि तुम मोर देन एवरेज मार्क मिलिबो ही मिलिबो देन फर्स्ट डिफाइन सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी देन ताको डिफरेंशिएट करो नेक्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फर्टिलिटी ऑलरेडी तुम डेफिनेशन दे देछो ओनली फैक्टर्स लिखो अब जत्ते बेले भी फैक्टर्स पडुची ताको क्लाइमेटिक एंड एडाफिक और मैनेजमेंट फैक्टर्स ए तीनटा रे डिवाइड करो क्लाइमेटिक रे जा क्लाइमेटिक फैक्टर रहला एडाफिक रे फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल सॉइल प्रॉपर्टीज रहला किछि भी फैक्टर को क्वेश्चन गोटे भी पड़ला जो जगह रे हेई परिबो माने क्लाइमेट सॉइल और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अफेक्ट करथबो तो फर्स्ट वन इज क्लाइमेटिक फैक्टर्स देन soil related or adaptive factor physical chemical biological then management is nothing but agronomic practices जदि किछि अछि तो ये गला फैक्टर्स रो तापर एसेंशियल न्यूट्रिएंट व्हाट डू यू मीन बाय एसेंशियल न्यूट्रिएंट देन एसेंशियल न्यूट्रिएंट रो डेफिनेशन केमती एसेंशियलिटी कांसेप्ट कोन एसेंशियल न्यूट्रिएंट कोन विथ एग्जांपल then functions and efficiency of primary nutrient तो first define primary nutrients then its function and efficiency एंती खाली आंसर जदी खाली सबुडा खाली लेखि पळेबो दैट डजंट मीन कि तुमको मार्क मिलिबो बोले जेतबेले सर माने जानती इवैल्यूएट करिया पई सेतबेले से माने ऑलरेडी भाग करी रखतांती मार्क फर्स्ट दे डिवाइड द मार्क्स क्वेश्चन अनुसार मार्क डिवाइड हो जाए तापरे तुमर हैला आंसर को जीवो जदि तुम आंसर को सही अनुसार डिवीजन करके लिखिछो देन यू वुड गेट मोर देन एवरेज मार्क्स जदि डिवीजन करी रखिनो ताले सही सेक्शन रे जहां भी थिबो लाइक 5 मार्क्स कोर्स भी थाए ताको 5 मार्क रो 5 मार्क पूरा काटी दियंती
तुम 4 पेज 5 पेज लिखिथिबो किंतु तुम पाखरे जदी सेही जिंसडा नथिबो तुम काटी देबे पूरा मार्क ही देबेनी। आ गोटे जिंस जदी किसी जानिचो या न जानिचो भी एटलीस्ट हेडिंग देकी किछि भी लिखि दियो एने बहुत सारा खाता था इवैल्यूएट करिया पे एटा माने एमती नुहे जे इवैल्यूएटर सब पढिबोनी स्टिल तुम पाखरे ऑप्शन अछि जे तुम खाता गोटे माने मास रे चाली भी जाई परिबो किंतु हेडिंग को मिस करिवोनी। हेडिंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन एग्रीकल्चर। जदी हेडिंग मिस करूचो आ जदी इवैल्यूएटर जानि पारुनी जे तुम हेडिंग देई न बोली ताले यू वोंट गेट मार्क्स हला बीट ओएफएस और ओएस। तो सब बेले जते बेले भी लिखिबो सही कीवर्ड को फोकस करके लिखिबो। ठीक अछि। Okay. एनीथिंग एल्स? आगे से क्वेश्चन? So that's all then. जदि किछि आउ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी थिबो ताले तुमे ग्रुप रे डायरेक्ट भी पचारि परिबो। जदि एठी किछि पचारिया पे असुविधा भी होछि काकू तो तुमे ग्रुप रे तुम क्वेश्चंस भी पुट कर परिबो। जदि पॉसिबल हैला म ग्रुप रे ही रिप्लाई दे देबी या फिर नेक्स्ट क्लास जेते बेला हो म नेक्स्ट क्लास रे रिप्लाई कर देबी। आ प्लीज नेक्स्ट क्लास को टिके जति की टेस्ट हेइछि से टेस्ट जदि सेति भी न माने न देइछ भी किछि असुविधा नै एटलीस्ट से पार्ट टा पढी के आसु सो दैट डिस्कशन टिके इंटरैक्टिव होबो। आ एग्रीकल्चर बहुत गुटे इजी सब्जेक्ट तुमे एई जगह रे जति की तुम क्वेश्चन कवर होछि तुम होल सिलेबस ही कवर हेजो एई जगह रे। तो एटलीस्ट सेति की पढी दियो माने most of the people you have exam within 2 months I guess for OFS जो माने फॉरेस्ट सर्विस दोछ। तो 2 मास भीतर एग्रीकल्चर ऑप्शनल कवर करिया को चाहू तो जल्दी टिके पढी के इंटरैक्टिव वे रे क्लास को रखिबा सो दैट तमे माने भी इन्वॉल्व होबो आ मु भी आंसर तुमको कोन बेटर हे परिबो से जिंसटा कहबी। आ नेक्स्ट क्लास रे पॉसिबल जदी का खाता मु देखथिबी तो से खाता रे कोन कोन भूल अछि कॉपी रे कोन कोन भूल अछि या फिर कोन बेटर कर परिबो से अनुसार सजेस्ट कर दे परिबी। So that's it. That's all about today, sir. Deepak sir. छाड़ो सार तो नांदी आउ किछि अधिकार डाउट अछि पछरली नै देवव्रत अछि सर। तो ऑलमोस्ट ऑनलाइन था हमें ठीक अछि। नेक्स्ट क्लास रे जहाँ डाउट अछि बच्चे न नेक्स्ट क्लास से फिर बेटा बात जो उड़ा रहला ठीक है सर। तो थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू देवव्रत थैंक यू ऑल। सर कोन मेसेज करछन देखि दियंतु। एवरीडे क्लास नै मु कहिबी सर कर अवेलेबिलिटी अनुसार हमें कहिबा ओडे शेड्यूल सर एवरीडे भी किसी प्रॉब्लम नहीं बाकी पिला यदि माने पढ़ी के आसबे या फिर से जिंस प्रैक्टिस करके आसबे ताले एवरीडे रखले किसी सुविधा अछि। एमती जदि पूरा माने केवल मु ही कहउथिबे आ के किसी कहउ नथिबे ताले किसी फायदा ही नै तारो। हां नै सेटा टिके गोटे मोर इंटरेक्शन डिस्कशन करण एथिरे जोडा कि तुमको पूरा ऑलमोस्ट पढ़ी थिबा दरकार हम देखा ता ऊपर प्रिपेयर हे कि टिके आसो ए सर को टॉपिक गुडा को हबो डिस्कस सेटा जदी आगुआ कहि देले सेटा भलो होना। सी ऑलरेडी हमर जो मॉक टेस्ट जो हेछि अंकित हमारा जो एग्रीकल्चर रे ग्रुप अछि जो थ्री की मॉक टेस्ट ऑलरेडी जो माने एनरोल करछि मॉक टेस्ट दोचंती तो से मॉक टेस्ट 1 रो डिस्कशन होतले सेम विषय में भी सर से ग्रुप रे मैसेज कर देबे कि ई क्वेश्चन तमे टिके पढ़ी के आसो तो सेटा को टिके डिस्कशन करिवे। ओके नै सेटा बेटर हो सर। हां ठीक अछि आज मु टिके हमें मु ऑलरेडी लेट रे पूरा इंस्टेंटली तुमको मैसेज करली तो ठीक अछि मु बाय 4-5 आवर्स पूर्वरु जो हमें जो मैसेज करिवो कि हां आज क्लास हबो बोली से अनुसार तमे पढ़ी के आसबो जो क्वेश्चन उडा का डिस्कशन हबो
सार भी अच्छा ग्रुप रे सार भी मेसेज करि परिबे कि मे बी आज ये डिस्कशन करिवा से अनुसार तमे पढ़ी के आसीबो मोर इंटरेक्शन हेले तो समस्त बेनिफिट हो ओके हो सर ठीक हो जाऊ ओके ठीक अछि ओके Thank थैंक यू देवराज Thank you, sir. Good night, everyone.